हाँ, आशा है कि आप सब लोग मुझे सुन पा रहे होंगे। तो इथिक्स की बात करें तो इथिक्स हमारे अंदर से ही होने चाहिए। जो हमारी नैतिकता है हम पर बाहर फेमस कोट है इसका वर्ड मोरल लेस एजुकेशन इज अ कर्स, यानी कि नैतिकता ही एक नहीं है। तो यहाँ से जो रिसर्च है और साइंस और टेक्नोलॉजी में भी अलग अलग हो एक अलग मैथोलॉजी के ethical issues और ethical problem may be different हो सकते हैं. So it is also imperfect people doing imperfect things for a variety of reasons. जैसे कि कुछ मिस्टेक्स करते हैं, ethical issues जो पैदा होते हैं. So nobody perfect in this world. तो perfectness यूज करने के लिए sometimes कुछ गलत कर देते हैं. Socially acceptable practice we later deem wrong, accidentally wrong. कभी क्या होता है कि जो बहुत समय से पहले जो नियम थे जब उसके बारे में और अदर अध्ययन होता है तो ये पता चलता है वो चीजें कॉन्सेप्ट को बदलना. लेकिन आज लॉन्ग टाइम में कोई एक प्रैक्टिस चलती रहती है तो वो एक पैमाना बन जाती है और लेटर ऑन वो एक मिस्टेक होती है. बाई एक्सीडेंटली हम अनइथिकल भेजते हैं, मिस ट्राई टू जस्टिफाई, कभी कभी बरस की स्थिति हम अपनाते हैं और उस बाद में उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं. Something is technology, especially in the field of science. कोई या कोई नया मेथड इसमें लाते हैं तो ट्रायल एंड एरर बेसिस पर होता है. ये वो नहीं है कि परफेक्टली उस मेथड को अटेम्प्ट बना लिया गया हो. हम रिफाइन करते हैं. वन कैन बी something do is not clear. Research is a हम क्या सर्च कर रहे हैं या हमें कहाँ पहुँचना है. टेंडेंसी कुछ हमारा सेल्फ ये चीज हम ऐसा सोच लेते हैं, अपनी हाइपोथेसिस को उसी तरह से प्रूव करने की भी कोशिश कर देते हैं. तो वो एक डिसेप्शन आपको पता नहीं होना चाहिए. फ्री ऑफ माइंड साइकोलॉजी you have to हेलो, गंगेली जी. आदरणीय विवेक सर, गुरुजी यदि आप मोबाइल यूज कर रहे हैं तो कहीं और जगह चेंज करके भी एक बार प्रयास कर सकते हैं सर. आपकी वॉइस क्लियर सब तक पहुंच नहीं पा रही है. फिलहाल भी तो नहीं हो रहा है सर. अभी आ रही है ठीक? अभी ठीक आ रही है? हेलो, क्या अभी ठीक?
हाँ ठीक ठीक। तो ethical issues की जब हम बात करते हैं तो I am a good person, why do I need to worry about research ethics? It is true that we can't do much about the bad persons who is determined to do evil things. जो वो बुरे हैं तो वो बुरा ही करेंगे, हम उनके बारे में कुछ नहीं कर सकते. However, research ethics is not just or even mostly about bad people doing bad things. वो हम उन्हीं के लिए होते हैं जो अच्छे हैं और जो अच्छा करना चाहते हैं. बाई मिस्टेक वो रिसर्च में फील्ड में कुछ मिस्टेक्स होती हैं. सर सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस. सर एक्चुअली अगर आप फुल स्लाइड मोड में कर देते या प्रेजेंटर व्यू में कर देते तो ये इजीली विजिबल होता. ओके, थैंक यू सर. एक्चुअली मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको. आप मुझे लगता है कि हमें ज़्यादा ठीक है. जी सर, अभी परफेक्ट वॉइस कम्युनिकेशन है. ओके ओके ठीक. क्या मैं पीपीटी आपको शेयर कर दूं, आप उधर चला दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. नेक्स्ट इज द why we हम ऐसा क्यों करते हैं कि हम अनएथिकल हो जाते हैं. So because of okay sir. ओके जी 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 ओके सर. ओके थैंक यू सर. क्या व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड, इसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं कि हम अनएथिकल हो जाते हैं. तो समटाइम अनएथिकल मीन्स मिस्टेक्स जो हो रही हैं या जो हम नैतिकता को छोड़ देते हैं. सो देयर आर प्रोफेशनल प्रेशर आल्सो के पीछे हमारा जो एक तनाव होता है कि एज अ प्रोफेशनल पब्लिश आर पेरिस कि हमें इतने ईयर में इतना पेपर पब्लिकेशन करना ही करना है या हमें इतने स्टूडेंट पीएचडी स्टूडेंट प्रोड्यूस करने हैं. तो फिर जब काम की अधिकता होती है तो हम थोड़े से लापरवाह हो सकते हैं या हमसे गलतियां हो सकती हैं. टेन्योर रिटेनिंग अ जॉब, समटाइम आपको टारगेट दे दिया जाता है. आजकल की जो व्यस्त लाइफ है और जो प्राइवेटाइजेशन खास तौर पर प्राइवेट कंपनीज हैं तो उनको एक टारगेट सेट कर दिया है कि इन दिस ईयर इन दिस मंथ यू हैव टू पब्लिश दिस मच अमाउंट ऑफ पब्लिकेशन और टू रिटेन अ जॉब. अपनी जॉब बचाने के लिए भी आपको पेपर पब्लिकेशन करना है या रिसर्च करनी है, अपना आउटपुट देना है. दैट इज ऑल्सो प्रेशर. टेन्योर जैसे अभी हम लोग ये 6,000 से 7,000 में जाना है, 7,000 से नेक्स्ट लेवल में जाना है. सो वी नीड हमें प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर बनना है, एसोसिएट प्रोफेसर से प्रोफेसर पे जाना है. तो देयर आर सर्टेन प्रेशर जिसकी वजह से भी हमारा टेन्योर, रिटेनिंग अ जॉब, कीपिंग अप विद पीयर्स, सिक्योरिंग ग्रांट्स, जो रिसर्चर्स वर्क कर रहे हैं उन्हें अपनी नेक्स्ट ग्रांट को सिक्योर करना है. तो हमें पहला काम विद इन टाइम लिमिट पूरा करके देना है. देन ओनली वी कैन अप्लाई फॉर द नेक्स्ट और वहाँ पर हमें भी दोबारा से जल्दी मिलेगा जब हम आप काम ख़त्म कर लेते हैं. सो बीइंग फर्स्ट टू अ डिस्कवरी मैनी ऑफ द टाइम जो स्पेशली इन द साइंस फील्ड पहले कौन करेगा, और इस फर्स्ट आने की कोशिश में मैनी ऑफ द टाइम हम बहुत सारी चीज़ों को छोड़ देते हैं या वो छूट जाती हैं, हम ओवरलुक कर देते हैं. सो ऑल ऑफ दिस इनकरेज शॉर्टकट्स एंड मिस मैनर्स और वर्स. दिस आर द सम फैक्टर्स जो कि हमारे रिसर्च एथिक्स को अफेक्ट करते हैं. दिस इज द retraction watch later on example. What are the moral foundation of the research? So doing good for human, animals and the planet, future generation etc. by the pursuit of the truth and the knowledge. हम हमारी रिसर्च का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि डूइंग फॉर द गुड ह्यूमंस और गुड फॉर द एनिमल्स, गुड फॉर द प्लानेट एंड फ्यूचर जनरेशन. And our duty to respect individuals which are in जो रिसर्च में इन्वॉल्व हैं, चाहे वो हमारे सब्जेक्ट हों या जिस पर हम रिसर्च कर रहे हैं. our possible duties
to the animals, be kind enough toward the animals, our obligation to the society, हमारे समाज के लिए जो रिसर्च हम आउटकम आएगा वो हमारे समाज के भले के लिए होना चाहिए. Various obligations derived from these foundations and they can be in tension with one another. और एक दूसरे से ये जुड़ी हुई चीजें भी रहती हैं. Some areas of research ethics, research misconduct, जिसमें कि falsification, fabrication, plagiarism ये सब आता है, collaboration issues होते हैं, authorship, data ownership and management, peer review, conflict of interest. One by one, I will take care here. Research misconduct. So, according to the National Science Foundation definition, so fabrication means making up data or result and recording or reporting them. Fabrication, हम जो कोई रिसर्च जिसके लिए हमें डाटा की आवश्यकता है तो हम उसको फैब्रिकेट कर देते हैं, यानी कि बना लेते हैं. अब एक्चुअल रिसर्च हुई या ना हुई, या फिर कोई डायग्राम्स हैं तो हम इमेजिनरी पॉइंट ऑफ व्यू पर उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं. एज अ टैक्सोनॉमिस्ट मैंने कई बार ये पेपर्स वगैरह में देखा है जब हम रिव्यू करते हैं या करते हैं कि चूँकि अर्लियर डेज में जब हम कैमरा लेंस डायग्राम बनाते थे, मैनी ऑफ द टाइम रिसर्चर्स ने अपने रिम और विल पर उसको डायग्राम को मॉडिफाइड करते थे और बहुत सारे ऐसे हैं एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर कि पेपर को बाद में मर्ज कर दिया गया, न्यू फाइंडिंग्स खत्म हो गई. Right, so fabrication, making of data or result in reporting them. Falsification means manipulating research material, equipment or process or changing or omitting data or results such that research is not accurately represented in the research record. Means data को जब आप modify कर देंगे, falsification जैसे questionnaire methods, questionnaire जब हम questionnaire use करते हैं, sometimes सैंपल साइज को इंक्रीज करने के लिए फॉल्सिफिकेशन का सहारा भी ले लेते हैं लोग. Plagiarism means the appropriation of another person's ideas, process, results or words without giving appropriate credit. किसी दूसरे के कंटेंट को, आइडियाज को, प्रोसेस को, रिजल्ट को हम अपना बना करके पेश कर देते हैं. दिस इज कम्स इनटू द प्लेजरिज्म. रिजल्ट रिसर्च मिसकंडक्ट डज नॉट इंक्लूड ऑनेस्ट एरर और डिफरेंस ऑफ द ओपिनियन. मीन्स अगर आपकी रिसर्च में जैसे मिसकंडक्ट में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, जैसे कि एक रिसर्च में किसी दूसरे का पेपर कुछ ओपिनियन उसका कुछ और आ रहा है, उनके डाटा ऑन द बेसिस ऑफ देयर डाटा or their conclusion is different. So opinion difference is not the misconduct of the research, because आपका जो opinion है वो आपके डाटा के बेस पर, आपके रिसर्च के बेस पर आ रहा है. So it is not included as a misconduct. So example of research misconduct में हम one by one देखेंगे. जैसे image manipulation होता है, many of the time people image को change कर देते हैं, स्पेशली कैमरा लिस्टोडा के समय पे ऐसा होता था. और आजकल की जो स्पेशली द बार कोडिंग या डीएनए बार कोडिंग के समय पर इसको चेंज कर दिया जाता है, इलेक्ट्रोफोरेंसिस के डाटा को मैनिपुलेट कर देते हैं लोग. डाटा फैब्रिकेशन और फॉल्सिफिकेशन, डाटा ओमिशन, सेपरेशन मीन्स आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, आपके मन मुताबिक आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर इस चीज़ को इतना बढ़ा दीजिए, दूसरे को घटा दीजिए. तो एक वो हाइपोथेसिस प्री माइंडसेट जो आपका पहले से माइंडसेट है कि दिस इज माय कंक्लूजन, और आप उस कंक्लूजन के लिए अपने डाटा को मॉडिफाइड कर दीजिए. डाटा ओमिशन, सेपरेशन, प्लेजरिज्म फ्रॉम द वर्क ऑफ अनदर कुड आल्सो बी आइडियाज gleaned from the peer reviewed and used as one's own work. इस पर डिटेल नेक्स्ट जो हमारा IPR है मैं उसको चर्चा करूँगा. Sabotage, deliberately destroy the damage, means डैमेज को या कोई इमेज है उसको अल्टर कर देना. And many of the papers you can also find out on the retractionwatch.com. एक जो पेपर मैंने आपको पहले यहाँ पर दिखाया, इसमें ये रिसर्च पेपर पब्लिश हो गया, इसके बाद इसको वापस ले लिया गया क्योंकि इसमें डाटा फाल्सिफिकेशन किया और मॉडिफिकेशन किया गया था. इस तरह के और भी एग्जाम्पल्स आपको इस रिट्रैक्शन साइट पर मिल जाएंगे.
collaboration issues होते हैं. So what kind of research ethics issues can you think of that might stem from collaboration? There are conflicts of authorship. First author कौन होगा, second author कौन होगा, third author कौन होगा, and for that purpose we do some mischievous act. Intellectual property right भी इसमें आते हैं. Writer with the experiment in misconduct, good record keeping, because जब आप collaboration research में collaborative research होती है, so there are many people who are working all together, और उसमें से अगर कुछ रिकॉर्ड कीपिंग किसी की जन में आती है और वो वहाँ पर कुछ मिसबिहेव करता है या बाई मिस्टेकली, तो अगर डाटा चेंज होता है तो एक्यूरेट कैलकुलेशन आपको नहीं मिलती. आप यू आर राइट एट योर पॉइंट, बट जो आपके कोलैबोरेटिव रिसर्च कोलैबोरेटर है वो वहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है और इससे हमारी जो डाटाज हैं वो मैनिपुलेट हो जाते हैं. जैसे कि एक the following individuals, एक लिस्ट है मैंने जो प्रिपेयर किया है. The following individuals contributed in some way to the work reported in the manuscript to be submitted for the publication, who should not be listed as an author, and in what order. जब एक collaborative research है तो उसमें lab chief होते हैं, program director, technician and postdoctoral fellow. Beside that students भी होंगे, undergraduate research assistant होंगे, plus के पास animal caretaker, departmental colleague of another university. So एक authorship में हम देखते हैं पूरा पैराग्राफ हो जाता है. तो वहाँ पर फिर सबके अपने अपने पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं कि भाई ऑथरशिप किसे मिलेगी, फर्स्ट ऑथर कौन होगा, सेकंड ऑथर कौन होगा. All these things are the authorship trade. So who owns the data? अब आप collaborative research कर रहे हैं, डाटा कहाँ पर कलेक्ट हो रहा है, तो उसका ऑनर कौन होगा. Who owns the data and who can make use of it in the future? It may be कि आपका ये डाटा रिजर्व हो और लेटर ऑन कोई उस डाटा का यूज करके फर्दर यूज करे फ्यूचर में. आपका ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है लेकिन फिर यहाँ पर जैसे कन्फ्लिक्ट स्टार्ट होते हैं. कैन लैब नोट्स एंड मटेरियल बी टेकन ऑफ साइट. आपका प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद उसका मालिक कौन होगा. तो एज कॉलेज में हम ये होता है, कॉलेज में कोई प्रोजेक्ट आता है तो जो मटेरियल है वो या तो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर के पास होता है या फिर वो डिपार्टमेंट को या कॉलेज को चला जाता है. बट और दूसरे जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं इश्यूज आते हैं. व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटी डू लैब वर्कर, स्टूडेंट, असिस्टेंट हैव इन डॉक्यूमेंटिंग लैब वर्क. Reviews, what do you do if you learn something from reviewing manuscript that could help you on research? आप रिव्यूअर हैं और आपके पास एक रिसर्च पेपर आता है एंड ऑब्वियसली कि वो आपकी रिसर्च से रिलेटेड होगा और वहाँ से आपको कुछ आइडिया मिलता है. तो ये आपको एक पब्लिक डोमेन में अभी ये पेपर नहीं है, आपके पास ही आ रहा है, तो आप उसका किस तरह से यूज कर सकते हैं. What can you do to protect your intellectual property during the review process? Can a student read manuscript on behalf of a professor? ऐसा भी होता है. Conflict of interest, a situation in which one experience conflicting pulls from one's personal interest and from one's professional obligation. एक ही पर्सन होता है लेकिन असाइनमेंट दो होते हैं, एक वहाँ पर एक उसका प्रोफेशनल होता है, दूसरे पर पर्सनल एंडीवर होता है. तो वहाँ पर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा होता है जिसकी वजह से मिसकंडक्ट हमारे रिसर्च में आते हैं. मोस्ट डायरेक्ट एग्जाम्पल बीइंग पेड टू से समथिंग अनट्रू. इस आपको कोई कंपनी फंडिंग कर रही है तो आपको उसको प्रमोट करने के लिए सम टाइम बीइंग पेड टू से समथिंग अनट्रू, जो सही नहीं वो आपको बोलने को कहा सकता है. इनडायरेक्टली knowing that if you say something positive about a company that gave you a grant, you may be more likely to get a grant from them again in the future. So these are the pressure जो कि हमें मिसकंडक्ट करने को मजबूर कर देती है, हमारे उसको जस्टिफाई कर लेते कि चलो ठीक है. Another indirect example, a funding agency may stipulate that they have a right to decide whether you can publish your finding or delay publication. ऐसा
बहुत सारी जो साइंटिफिक मूवीज होती हैं वहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से रिसर्चर्स को, साइंटिस्ट को एक पर्टिकुलर रिसर्च करने के लिए फोर्स किया जाता है. Ghost writing and ghost management in the medical literature is rampant and raises their question. Yes, फिर जब आपकी रिसर्च आपकी है और आप उसको पब्लिश नहीं कर सकते, बिकॉज मेडिकल, स्पेशली इन द मेडिकल, वहाँ पर एथिकल इशूज बहुत ज़्यादा होते हैं, स्पेशली जो स्टेम सेल या जो कि क्लोनिंग की प्रोसेस है, यहाँ पर एथिकल इशूज हैं जिसकी वजह से एथिकल क्लियरेंस नहीं मिलता है और कंपनीज चोरी चोरी वो रिसर्च करती हैं, लेकिन अब आप उसको पब्लिश नहीं कर सकते. तो घोस्ट राइटिंग यानी कि आप बिना नाम के या किसी और नाम से ऐसे लिखना स्टार्ट करते. So that conflict of obligation, having duties to our more parties at the same time, for example, the duty to research and the duty to so that you have a pressure, burden, overburden upon you, and it affects the research. Not to mention the duty to one's family, friends, and self. Complexity and funding. Moral issues beyond scientific misconduct can arise depending on one's field of research and funding source. For example, stem cell research. यहाँ पर funding source जो it may be private companies, so it may be the medical issues या फिर आर्मी अपनी रिसर्च कर रही हो कि किस तरह से हम स्टेम सेल से ऑर्गन प्रोडक्शन कर सकें या क्लोनिंग कर सकें, जिससे कि हम something that is unethical and dual use biological agent. For example, corona, maybe अभी it is not certain कि कोरोना कहाँ से आया, लेकिन it may be possible कि ये एक बायोलॉजिकल एजेंट था जिसके मिसयूज किया गया, जैसे कि एंथ्रेक्स को एंथ्रेक्स वायरस है, इट इज यूज्ड एज इन लैब फॉर वेरियस पर्पसेस, लेकिन दूसरी तरफ इसी का यूज हम बायोलॉजिकल वेपन के फॉर्म में भी कर सकते हैं. वेपनाइजेबल टेक्नोलॉजी मीन्स जो भी रिसर्च हुई, जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टीन का जो स्टेटमेंट है कि अगर जब बॉम्ब अटैक, एटॉमिक बॉम्ब अटैक होता है जापान पर, देन ही रियलाइज दैट कि हमारी जो रिसर्च थी जो हमने एटॉमिक बम बनाने में यूज़ हो गई, जबकि एटॉमिक एनर्जी को शांतिपूर्ण या पीसफुल वर्क करने के लिए उन्होंने ये फार्मूला शायद ईजाद किया होगा, लेकिन उसी फार्मूले का यूज़ एटम बम बनाने में कर लिया गया. तो वेपनाइजेबल टेक्नोलॉजी को फिर हम हमारे रिसर्च के बेस पर जो टेक्नोलॉजी होगी उसका उपयोग कहाँ पर होगा, तो वो जो रिजल्ट है वो यहाँ पर रिसर्च इथिक्स को अफेक्टेड करता है. एनिमल सब्जेक्ट रिसर्च में भी यूज एनिमल इन रिसर्च, ये आज भी डिबेट है. पेटा में जो लोग हैं वो अभी कह रहे हैं कि हम नहीं एनिमल्स पर हमें जन्मों से कम नहीं करनी चाहिए. So maybe use animal in research. It is a question of ethics. Whatever the argument for or against, दोनों ही तरफ से दी जाती है कि एनिमल्स पर करना चाहिए, एनिमल पर क्यों नहीं करना चाहिए. देयर आर आर्गुमेंट. Are there limit to have to how we might treat them and if so? Actually जब भी हम एनिमल्स की बात करते हैं तो उनका ह्यूमनाइजेशन कर दिया जाता है कि वो looks like a human being. But there are something else जिस पर कि हमें चर्चा करनी चाहिए. एक तरफ तो आप कहते हैं कि जब आप ह्यूमनाइजिंग कर देंगे तो फिर वो क्या होगा, जैसे कि बांधवगढ़ एमपी के नेशनल पार्क में एक टाइग्रेस थी. टाइग्रेस को जला दिया गया, उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ, जबकि उस पर रिसर्च की डेड बॉडी, जैसे आज हम लोगों को प्रेरित करते हैं कि आप अपनी बॉडी डोनेट करो ताकि आप रिसर्च की जा सकती है, लेकिन इसी तरह से हमें वाइल्ड एनिमल्स को भी ह्यूमनाइजेशन कर दिया है कि वो दे आर ट्रीटेड एज अ ह्यूमन. मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप उनको किसी भी तरह से बिहेव करें, बट एक कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए जिसके आधार पर हमें रिसर्च को डिफाइन करनी चाहिए कि we may use animal or not to use. If use, how we treat them. So are there what are they and what justifies this limit? With एनिमल रिसर्च में हम 3 R's को
हमें याद रखने की कोशिश करनी चाहिए कि रिफाइनिंग एक्सपेरिमेंट टू कॉज लेस पेन एंड डिस्ट्रेस। जब भी कोई एनिमल होता है, जैसे कि अगर किसी ने मूवी डाउन ऑफ एग, राइस ऑफ एग, अगर ये देखें तो हम देखते हैं कि किस तरह से उन एनिमल्स को रखा जाता है और उन पर रिसर्च की जा रही है। वो अनदर इशू है कि ह्यूमनाइजेशन होता है और वो डिफरेंट तरीके से, लेकिन एनिमल्स पर रिसर्च करते समय हम ध्यान रखना चाहिए कि audible, I think audible, right. uh, so animal subject research, so reduce the number of animal, reducing the number of animal used if possible। यहाँ पर हमें 100 ऑफ एनिमल का रिसर्च करनी है, वहाँ पर हम 10 में अगर हमारा काम चल सकता है तो हमें ये करने की कोशिश करनी चाहिए। अननेसेसरी एनिमल्स को हमें यूटिलाइज नहीं करना चाहिए, चाहे वो रिसर्च हो या हमारी टीचिंग हो। जैसे कि अभी नाउ डेज फ्रॉग्स को कहा गया है। मैंने पहले ही कहा कि ये टॉपिक्स इतना वाइड था कि क्या छोड़ें और क्या रखें, ये स्थिति हो गई थी। तो स्लाइड्स का नंबर ऑफ स्लाइड्स ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें एस्केप करूँगा या फिर आप उसको देख लीजिएगा बाद में। मैं पीपीटी शेयर कर दूँगा सबके साथ में और हम फिर उसके बाद भी डिस्कशन कर सकते हैं। Nuremberg Code, this is all related with the human research, with especially the social science में जहाँ पर क्वेश्चन एडवोकेट करते हैं और humans are included in the our research। For example, हम क्वेश्चन ऐड फिलअप करा रहे हैं, तो अगर डिपेंड उस पर्सन की साइकोलॉजी क्या है उस टाइम पर, उसके अकॉर्डिंग वो आंसर देता है। तो वहाँ पर साइकोलॉजिकल एरर्स हैं, प्री माइंड सेट होता है। जैसे कि ये चुनाव का सी वोटर सर्वे होता है, दिस इज ऑल्सो, ये इसमें जो कोड है उनको हमें प्रॉपरली ध्यान में रखना चाहिए, न्यूरेमबर्ग कोड को और रिसर्च इथिक्स को। अदरवाइज अगर हम कई बार ये होता है कि पार्टियां आरोप लगाती हैं कि रिसर्च इन्होंने खुद कराई और अपना मैंडेट दे रहे हैं, इट इज़ पॉसिबल और ऐसा होता भी है। सो वी हैव टू फॉलो द न्यूरेमबर्ग कोड इन केस ऑफ ह्यूमन, क्योंकि ह्यूमन्स हमारे उसमें शामिल हैं। Thinking about research ethics can't make you a good person, but a study of research ethics can offer a map of ethical issues so that you can recognize them when you encounter them। ये ethics पढ़ने से ही नहीं आती, पढ़ने से नहीं आती, बस हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। सो वी हैव टू नो कि क्या एथिकल इश्यूज हैं, देन एड्रेस करना, ये एक रिसर्चर्स को ही एड्रेस करना है कि उसको किस तरह से एड्रेस करे, मिनिमाइज करे, ताकि एथिकल प्रॉब्लम्स कम से कम हो। So another part of my topic is the intellectual property rights। So these are the rights, that is intellectual property rights are a right given to person over the creation of their mind. It may be the patent, geographical indication, taxon of plant varieties, trade secret, layout design for integrated circuits, computer में circuits हम use करते हैं, that may be copyright, trademark, service mark, design,
या जो हमारे ज्ञान का उपयोग हम पैसा कमाने के लिए करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जो भारतीय दर्शन एक बहुत लंबे समय तक था, और फिर से कॉपीराइट करने का कोई प्रश्न ही नहीं था, लेकिन धीरे धीरे ये कॉपीराइट आता है। बेसिकली ये सभी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हैं, दे ऑल आर रिलेटेड विद द मनी मेकिंग। अगर हम देखें तो हमारे जो वेदों में नॉलेज है, वेद कभी अनरिटन थे या किसी ऑथर का नाम नहीं है। क्यों नहीं? अगर कॉपीराइट तब होता तो आज उनके पीछे भी नाम लिखा होता है कि ये इसका है। तो बेसिकली नॉलेज या जो ट्रुथ है, उन पर ये जो इश्यूज आते हैं ये मनी मेकिंग से ही आते हैं, और उसी के लिए फिर इनका यूज किया जाता है। सो the importance of intellectual property was first recognized in Paris Convention for the Protection of Individual Property and the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Work. Both treaties are administered by the World Intellectual Property Organization. इसके बाद जब ऑर्गेनाइजेशन ट्रिप्स आया, तब से ट्रिप्स में सब वर्ल्ड वाइड कंट्रीज इंक्लूड होने लगे ट्रेड के लिए। तो फिर ये इशूज बहुत ज़्यादा क्रिएट हुआ। अगर कंट्रीज ने यूनिलैटरली बायलैटरल अपने देश ने अपने लेवल पर अपने नियम बनाए, IPR बनाए, या फिर वैश्विक रूप से भी ये नियम परिभाषित भी किए गए और बनाए भी गए। मैं ये हिस्ट्री नहीं बताऊंगा, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं हिस्ट्री। So we can divide IPR into two main categories: copyright and related rights, and second one is the industrial property right, जहाँ पर कि हमें इकोनॉमिकल बेनिफिट्स होते हैं। हालांकि दोनों में होते हैं, लेकिन एक ज़्यादा इंडस्ट्रियल बेस्ड हो जाते हैं, इकोनॉमिक बेस्ड हो जाते हैं। Copyright and related rights, ये copyrights give authors the right to protect their work. By copyrighting your work, you ensure that others cannot use it without permission. So it includes copyright में literary work, films, music, artistic work, architectural design, right? So these are industrial property rights. Second one is the industrial property rights. They include trademark, patent, geographical indicators, and industrial design. Copyright में सॉफ्टवेयर पायरेसी, फाइल शेयरिंग, इलीगल अपलोडिंग, बर्निंग CDs and DVDs and much more. अभी कोई मूवीज आती है, हम थिएटर में ना देख करके हमें ऑनलाइन वो मिल जाती है, पायरेटेड होती है. दिस इज ऑल्सो द वायलेशन ऑफ द कॉपीराइट एक्ट. पेटेंट, the industrial rights. Patent is exclusively monopoly right granted by the government for a new invention to an inventor for his disclosed invention for a limited period of the time. Criteria to be a patent, it may वो आपका जो नया होना चाहिए, इन्वेंशन है, not to be publicly known in any way, anywhere in the world. Owners of the invention should be careful to keep the invention secret until a patent application has been successfully made. Invention step, something inventive step, something that represent an improvement over and any existing product or process that is already available. When the industrial application, वो आपका पेटेंट जो आपको मिलना है उसका कोई इंडस्ट्रियल यूटिलाइजेशन होना चाहिए, यूजफुल एंड हैव सम फॉर्म ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन. इट शुड बी कैपेबल बीइंग मेड और यूज्ड इन सम फॉर्म ऑफ. जनरली पेटेंट हम ये जनरल लैंग्वेज में तो पेटेंट आर नॉट फॉर ऑल. पेटेंट नॉट ऑल पेटेंट, सभी चीज़ें पेटेंट के कैटेगरीज में नहीं आती हैं, सच एज डिस्कवरीज, मैथमेटिकल मॉडल, साइंटिफिक थ्योरीज, स्कीम्स, रूल्स, प्लेइंग गेम्स, मेथड ऑफ बिजनेस, प्रोग्राम्स फॉर कंप्यूटर, प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्सेट्रा. So advantage of protection of patentee, enabling him to enjoy the right and to raise the capital for working his invention on a commercial scale. देखिए प्राइवेट कंपनीज में जो रिसर्च हो रही है वो केवल पैसे कमाने के लिए ही हो रही है. तो पेटेंट के थ्रू एक दूसरा इसका साइड व्यू है कि कोई पेटेंट हमें क्यों देना चाहिए. तो पेटेंट इनकरेज करता है रिसर्च को, एक नोबल रिसर्च को इनकरेज करता है.
So the patentee would be able to make a profitable use of his invention by selling his patent or by granting license to others, permitting the use of his invention, help for industrial growth by introducing new technologies. The scientific knowledge contained in the patent the specification help as a stepping stone for further research, provide incentive, inventive and creative ideas for further research and development in the field. Right, so plant breeder rights granted to a breeder of a new variety of plant that give breeder exclusive control over the propagating material and harvested material of a new variety for a number of years. Benefits, plant breeder rights to producing a reproducing material and conditioning the material for the purpose of propagation, offering the material for sale, selling the material, in importing the material, and exporting the material, stocking the material for any of the purpose described above. Trademarks, recognizable sign, design or expression which identifies products or services of a particular source from others. The trademark owner can be an individual, business, organization or any legal entity. Typically a name, word, phrase, logo, symbol, design, image or combination of these elements कोई भी आपका trademark बन सकता है. Trademark are used to claim exclusively properties of product or services. So here and another category of the IPR is the geographical indicators. A geographical indication is a sign used on products that have a specific geographical origin and possess qualities or a reputation that are due to that origin. अभी आप देखते हैं कि जब हमारे यहाँ का इंडिया का एप्पल का सीजन ऑफ हो जाता है तब भी हमारे यहाँ एप्पल्स आते हैं और उन पर कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो कि कुछ सिंबल होता है, हम ध्यान नहीं देते, कुछ एक लोगो छोटा सा चिपका होता है एंड दैट लोगो इंडिकेट द ओरिजिन ऑफ दैट प्रोडक्ट, वो कहाँ से आ रहा है. तो जियोग्राफिकल इंडिकेटर से उस जैसे हमें होता है कि हमें आगरे का पेठा खाना है या बनारस का पान खाना है, तो दे आर द जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स. बनारसी साड़ियाँ हैं तो उनका एक इंडिकेशन जो कि जियोग्राफिकल पोजीशन बताएगा और जियोग्राफिकल पोजीशन से हमें उस प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में पता चलता है और उसमें एश्योर कस्टमर भी एश्योर होता है कि हाँ चीज़ सही होगी अगर वो ऑथेंटिक है तो, इसलिए जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स यूज किए जाते हैं. More often in agriculture, country or to a place situated therein, being a place of origin of a product. जैसे कि दार्जिलिंग की ये अगर ये सिंबल है जियोग्राफिकल इंडिकेटर किसी प्रोडक्ट पर है, इट मीन्स कि ये प्रोडक्ट वहाँ को बिलोंग करता है. कोई दूसरी कंपनी या कोई दूसरा पर्सन उसको नहीं बना सकता है और बनाएगा तो दैट इज 420, मतलब बेईमानी का काम है और उस पर ये जिसके नाम पर इसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन का राइट मिला हुआ है वो IPR उसको क्लेम कर सकता है. दार्जिलिंग की फूड्स, कॉफी, मैसूर सिल्क और चन्नापट्टनम टॉयज एंड टॉल्स etc. Confers legal protection to geographical indicators in India, prevent unauthorized use of GI by others, helps consumer to get quality product of desired brand, promotes economic prosperity of the product of goods, essential to get protection in other countries. Trade secrets protect a business from the unauthorized disclosure or use of confidential information. जैसे कि अभी मैगी मसाला आता है इसमें भी ट्रेड सीक्रेट की चीज़ें उसमें नहीं ओपन करते हैं तो वो ट्रेड सीक्रेट होता है और वो किसी की इनको प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेड सीक्रेट इज नॉट लिमिटेड इन टाइम बट अनलाइक पेटेंट the disadvantage of this type of protection is that it is lost the moment it is discovered independently by a third party. अगर ट्रेड सीक्रेट है तो इसको कोई तीसरा व्यक्ति या दूसरा व्यक्ति इंडिपेंडेंटली डिस्क्लोज कर सकता है, लेकिन द एडवांटेज at least to a proprietor is that unlike patent there is no obligation to disclose the inventive or creative ideas to the society. तो एक आपका प्रोडक्ट आपका रहता है और कोई उसको कॉपी नहीं कर सकता है, ये ट्रेड सीक्रेट है. How long a protection lasts? Patent for 20 years, design for 10 to 5 years. Trade secrets तब तक जब तक कि कोई उसको उगल ना दे. Until someone spills the beans. Copyright life of author plus उसके बाद ये 60 years तक.
and trademark as long it is used. काफ़ी चर्चा में रहे हैं, जिसमें से कि एक था हल्दी का इशू हुआ था जब इन मार्च 1995 टू expatriate Indians at the University of Mississippi Medical Center, Jackson, Medical Center, Jackson, Suman Ketes and Harihar P. Kohli were granted a US patent. CSI filed, Marcel Caruso में director थे. Then CSI filed a case with the US Patent Office, challenging patent on the ground of prior art is it existing public knowledge. तो patent पाने के लिए ये एग्जिस्टिंग नॉलेज नहीं होना चाहिए, आपका न्यू इन्वेंशन होना चाहिए, जबकि टर्मरिक का यूज इंडियंस हजारों सालों से कर रहे हैं, मतलब जब से हमारी सभ्यता है. तो द टर्मरिक वाज केस फेल्ड टू मीट द नोवेल्टी क्राइटेरिया, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले से लोगों के बीच में यूज हो रहा था. द ग्रीन नीम एक अनदर गुड एग्जांपल है पेटेंट का, जिसमें न्यूमरस नीम प्रोडक्ट्स हैव रिसीव्ड पेटेंट, सेवरल ऑफ दीज हैव बीन ग्रांटेड टू इंडियन कंपनीज for a range of products including a contraceptive and environmentally safe pesticide and controversial patent granted to US company. तो मिला था, कंट्रोवर्सी हुई थी, चर्चाएं हुई, लेकिन वो पेटेंट खारिज नहीं होता क्योंकि वो पेटेंट उस कंपनी को उसकी प्रोसेस पे मिला था, प्रोसेस पेटेंट था, ना कि प्रोडक्ट पेटेंट था. तो वो स्टोरेज से हटाया नहीं गया. Then basmati rice, originally from India and Pakistan, basmati became a controversial issue after Rice Tech, a Texas-based company, in 1997 patented some type of rice they developed as American basmati. Rice Tech company ने जो basmati and Texamati के नाम से publish किया था. Then Indian government, after putting together the evidence, officially challenged the patent in June 2000, and the Indian farmers export. अगर ये उनको मिल जाता तो क्या होता है, इंडियन फार्मर्स लगभग 250 मिलियन US डॉलर का बासमती प्रोड्यूस एक्सपोर्ट करते हैं, तो फिर अटेम्प्टेड टू सेल इन लॉन्ग ग्रेन राइस, तो ये अमेरिका को चला जाता, या अमेरिकन को पेटेंट मिलता तो उसकी क्वालिटी अमेरिका में डिमांड, दूसरे देशों में उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाती, जबकि इंडिया और पाकिस्तान का जो नेटिव राइस बासमती राइस है, उसकी उस पर हमारे फार्मर्स को और ट्रेडमेंट्स को भी रॉयल्टी देनी होती अमेरिकन कंपनीज को, बिकॉज वो वैरायटी इंडियन थी, नाम उनका था कि वो उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं. सो हाउएवर इफ द पेटेंट इज नॉट रिवोक्ड, राइस टेक कंपनी कैन नाउ sell its rice under the brand name Basmati, which will definitely cut into India's and Pakistan global market share, especially as the rice grown in the US could be sold cheaper than the Indian and Pakistani variety. Of 40 cases filed, India has been successfully in winning 15 cases against countries like Britain, Australia, France, Spain, Chile, and UAE. इन इशूज का से हमें शिक्षा क्या लेनी चाहिए. सो मैनी इंडिजिनस कम्युनिटीज लर्न हैव रिटन ट्रेडिशन कल्चर रिकॉग्निशन के ट्रेडिशनल नॉलेज. मुझे याद आ रहा है कि जब ये बासमती, हल्दी और नीम का इशू हुआ था, इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी और CSIR की तरफ से भी ट्रेडिशनल नॉलेज पर बहुत ज़्यादा रिसर्च और फंडिंग हुई, ताकि इन ट्रेडिशनल नॉलेज को, एथनोबॉटनी को डॉक्यूमेंटेड किया जा सके. बिकॉज हमारा जो लिटरेचर है वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है, वेल वी आर यूजिंग हल्दी और नीम, हम शताब्दियों से यूज़ कर रहे हैं, लेकिन डॉक्यूमेंटेड नहीं है. तो ये कुछ अच्छे इशूज हुए कि हमने अपनी चीज़ों को डॉक्यूमेंटेड करना शुरू कर दिया. इट हाईलाइटेड द एडवांटेज इनहेरेंट इन द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज. ओके, तो मैं जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ एज ए रिसर्चर्स. हाँ, और कन्याली जी मैं बहुत जल्दी समाप्त कर रहा हूँ, 5 मिनट के अंदर. तो इंटेलेक्चुअल as a researchers, what researchers need to know? Intellectual property right help protect creation of the mind and
include invention, literary, ये सब मैंने आपको पहले ही बताया. Then intellectual property rights are governed by the World Intellectual Property Organization. हमें ये and WIPO harmonized global policy and protect IPR across borders. As researchers, you rely on the published work to create a new hypothesis or to support your finding. You should therefore ensure that you do not infringe copyright of other, the owner or author of the published work. Plagiarism policy. Actually, we are here for research, and we maximum we all are teachers and related with the education and also doing the research. तो यहाँ पर UGC के norms plagiarism से related या intellectual property right में plagiarism जो misconduct है या unethical चीजें हैं, इसके बारे में UGC norms क्या कहते हैं? The core work carried out by the author shall be based on original ideas and shall be covered by the zero tolerance policy on plagiarism. In case plagiarism is found and claimed, then it would be brought under plagiarism disciplinary authority for necessary and maximum penalty. The core work shall include. यहाँ पर plagiarism 1% मतलब plagiarism तो नहीं होना चाहिए. यहाँ पर especially abstract, introduction, objective, hypothesis, research methodology, analysis, interpretation, summary, observation, conclusion, recommendation and references. यहाँ पर similarity भी नहीं होनी चाहिए. As a अगर similarities plagiarism तो UGC और unethical है. Plagiarism 1% accepted नहीं. एक concept ये है कि 10% से कम होना चाहिए. वो 10% से कम similarity होनी चाहिए. न कि plagiarism 1% भी allow नहीं है. So जब आप कोई research publication आर्टिकल मैन्युस्क्रिप्ट या थीसिस सबमिशन के लिए जाते हैं और अगर वहाँ सिमिलरिटीज अबव 10 to 40% है तब यूजीसी के रूल्स क्या कहते हैं? सो shall be asked by the authority, means the publisher or the journal, they ask withdraw manuscript submitted for publication and shall not be allowed to publish any work for minimum period of 1 year if the similarities found in between more than 10 and less than 40%. Label 2 similarities above 40% and 60%, more than 40% and less than 60% shall be asked to withdraw manuscript submitted for the publication and shall not be allowed to publish any work for a minimum period of 2 years and shall be denied a right to 1 annual increment in case of academician. As a teacher, हमें ध्यान रखना चाहिए. They also shall not be allowed to be a supervisor to any UG, PG, Master, MPhil, PhD student or a scholar for a period of 2 years. Label 3 similarities above 60% shall be asked to withdraw manuscript submitted for publication and shall not be allowed to publish any work for a minimum period of 3 years and in case of faculty shall be denied a right to 2 successive annual increment and shall not be allowed to be a supervisor to any UG, PG, Master, MPhil or PhD student scholar for a period of 3 years. Based on the severity and above penalty level, in case to below 10% of the plagiarism is found, authors shall be immediately asked to correct the paper and revert. Beside, in case the one who has been claimed for plagiarism and has been found accused to doing so. Hello, sir. Sorry for the disturbance. Kindly conclude your lecture. Mostly in 2 minutes. Okay. उतना ही time. Okay. Beside, in case the one who has been claimed for plagiarism and has been found accused to doing so shall be subject to court of law by the one who has claimed for the penalty as per the copyright norms. Right, so thinking about research ethics can't make you a good person. Thinking about, हम केवल सोचते हैं ये ठीक नहीं, but a study of research ethics can offer some map of ethical issues so that you recognize them when you encounter them. It can be solve the problem you might have, but it is very helpful to have advanced wording of where the perils lie. It will also help you recognize when you or someone you know are entering or in the middle of an
ethically challenging situations so that you can avoid it or address it. Prophylactic is a much better approach than crisis management. अगर कुछ बीच में गड़बड़ हो रहा है तो उसको पहले ही सुधार लिया जाए, बजाय इसके कि बाद में crisis management किया जाए. So you must actually think about the ethical component of what you do. You will give very little guidance in the situation. Learning about research ethics can't motivate you to want to do the right thing, but it will give you more tools with which to think about difficult situations in the future. These are some references you can go through also. Okay, so it's all about from my side. Thank you very much for giving me the opportunity to present.